Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last two diseases regarding digestive system. So let's move to the whiteboard. So the last two diseases, number one is piles. Which is also called as hemorrhoids. So dear students, ये disease काफ़ी renowned disease है regarding our countries like India, Pakistan and उसकी रीज़न ये आपको इसमें इश्तहारों में काफ़ी मिलेगी ये डिज़ीज़ इवन के न्यूज़पेपर्स के अंदर इसके इलाज के हवाले से मुख्तलिफ तरह के सो इसको उर्दू में बवासीर कहा जाता है. सो पाइल्स which is also called as hemorrhoids. Are the dilated, tortuous veins or masses in the anorectal mucosa. Dear students, पहले इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलो. So piles और hemorrhoids, these are masses, these are dilated. Dilated का मतलब होता है फैले हुए जिसका डायमीटर इंक्रीज हो. ये बेसिकली वेन्स होती हैं जो कि एनोरेक्टल म्यूकोजा. एनोरेक्टल हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था. रेक्टम जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का और उसकी जो एंड होता है सो दैट इज़ कॉल्ड एज उसमें एट द एंड देयर इज़ एन ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज एनस. तो वहाँ की जो वेन्स होती हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस दे बिकम डायलेटेड एंड दे बिकम टॉर्चुअस. टॉर्चुअस का मतलब होता है कम्प्लेक्स और ये आपस में इंटरमिंगल्ड इस तरह से. वेन्स और मैसेस इन द एनोरेक्टल म्यूकोजा वो उभार से बन जाते हैं, एक मैसेस से बन जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज पाइल्स. क्लियर? एंड इट हैज़ गॉट टू टाइप्स. Or hemorrhoids, internal hemorrhoids and the second one is external hemorrhoids. तो डियर स्टूडेंट्स जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं दीज आर द मैसेस ऑफ डायलेटेड tortuous veins present inside the rectum or anorectal region. तो अगर ये मैसेस विद इन द रेक्टम बनेंगे तो इनको हम इंटरनल हेमरॉइड्स कहेंगे. एंड इफ द मैसेस protrude means and become outside. So masses protrude outside the anal region
they are called as the external hemorrhoids. I'm going to show in the diagram. So this is the last part. Rectum. And anus. If these masses are formed inside the anorectal region, they are called as internal hemorrhoids, and if they protrude outside, so these are internal hemorrhoids, and this one is the external. Sometimes we also classify them as blind or bleeding. Clear? तो blind का मतलब होता है जो bleed नहीं कर रहे होते, और जो bleeding का मतलब होता है जो जिनमें से bleeding होती है, मतलब कि blood नहीं pass out हो रहा होता है during the passing of stool or during defecation. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या, sometimes this is a rectum and this is anus. So these hemorrhoids bleed sometimes, so are called bleeding piles or hemorrhoids. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर जो पाइल्स की वजह से जो उनसे अंदर ऐसे ट्यूमर्स की तरह की ये फॉर्मेशन है, ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. सो दे फॉर्म एन ऑब्स्ट्रक्शन. सो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज द पाइल्स also depress the defecation reflex. The defecation reflex, वो defecation reflex को भी depress कर देती है, and due to which the feces in the rectum become hard and become difficult to pass. Clear? और ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि समटाइम्स दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू पास देम. और जब ये पास आउट करेंगे, चूँकि ये हार्ड हो चुके हैं, तो ये जो मैसेज हैं, जब इनसे वो ऐसे फ्रिक्शन के ज़रिए यानी कि इसके ऊपर प्रेशर डाल के निकलेंगे, सो इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग. ठीक है, तो इसके साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है. या तो दैट इज़ वर्स सिचुएशन. एंड इट ऑल्सो देयर इज़ ऑल्सो feeling of pain in the anal region, and also discomfort so dear students, what we have to do, the situation
is aggravated if the person is suffering from constipation. और डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। एटलीस्ट 3 डेज तक अगर स्टूल पास ना हो और स्टूल हार्ड हो जाए, सो दैट इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन में तो वैसे ही डेफिकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और यहाँ पर सिचुएशन जो है कंपाउंड हो जाएगी इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम piles as well as constipation. Clear? Dear students, we have to fix it. How it is fixed? Number 1, the treatment includes, number 1, use of food softeners. For example, dietary or plant roughage और roughage, ये प्लांट फाइबर्स होते हैं जो कि बल्क बनाने में हेल्प करते हैं और स्टूल को सॉफ्ट रखते हैं। और यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था, दीज आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। And also, there may be requirement of stool softeners. For example, paraffin. So these stool softeners keep the stool soft, so it will become easy to pass. एंड और डियर स्टूडेंट्स, जब ये ड्यूरिंग इट्स पैसेज, ड्यूरिंग डेफिकेशन, यहाँ से जब वो सॉफ्ट स्टूल यहाँ से पास आउट होगा तो कम चांसेस होंगे कि वो उसके साथ फ्रिक्शन के ज़रिए इसको जो है वो इनकी जो मैसेज हैं इसके साथ रगड़ खाए और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सके। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स एक और एडवाइस की जाती है, दैट इज़ सिड्स बाथ। वार्म वाटर के अंदर सम एंटीसेप्टिक उसको डाल के और उसको कहा जाता है कि थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठेंगे। सो एक तो इन्फेक्शन से भी ये बचाएगा और दूसरे नंबर पर ये एक कंफर्टेबल सेंस जो है वो क्रिएट करेगा। इसमें मतलब कि जो पेन की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो एक डिस्कम्फर्ट लेवल है वो भी थोड़ा सा रिलीव हो जाता है। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स ये जो एक्सटर्नल जो हेमरॉइड्स हैं ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि ये दे स्टार्ट ब्लीडिंग टू मच। इसमें ब्लीडिंग जब ज़्यादा हो जाए, इफ़ देयर इज़ टू मच ब्लीडिंग, if there is too much bleeding during defecation, the masses, or which we say them as the piles, must be removed surgically. तो सर्जिकली इन मैसेज को रिमूव कर दिया जाता है तो फिर काफ़ी हद तक ये बेहतरी होती है। और ये स्टूडेंट्स एक प्रिकॉशन भी बताई जाती है, दैट डू नॉट सिट ऑन हार्ड सरफेसेस। तो उससे भी जो है काफ़ी हद तक इसमें अफाका हो जाता है। और ये स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, विच आई हैव सीन ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दे यूज्ड टू गो टू द क्वैक्स एंड दे गिव देम सम मेडिसिन्स लाइक कुश्तास। तो डियर स्टूडेंट्स इससे बचिएगा, ये जो कुश्ता होता है इससे बचिएगा। There was a case in BVH, Bahawal Victoria Hospital. My teacher
of surgery, that he told us that there was a case in emergency, और इमरजेंसी में केस था, और देयर वाज अ सीवियर ब्लीडिंग, एनल ब्लीडिंग, और जब उसको उसकी सर्जरी की गई तो पता चला कि यहाँ पर रेक्टम से भी आगे, मीन्स को जो सिग्माइड कॉलन वाला जो पोर्शन है वहाँ पर देयर इज़ अ बॉटल। उन्होंने जब सर्जरी करके उस बॉटल को वहाँ से रिमूव किया तो पता चला कि इट हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ ड्रग्स। एक बॉटल थी, उसकी साइड्स पे छोटे छोटे सुराख किए गए थे, और उसमें कोई जो जिसको हम देसी दवाइयाँ का कहते हैं, इसी तरह से कोई क्वैक था, उसने इसमें रख दिया, और ही वाज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, और उसका इलाज था कि इट हैज़ टू बी टेकन, और जब तक ये यहाँ पर आएगा तो ये मैसेज जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, लाइक दिस। सो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ foolish and dangerous treatments, ठीक है। यू शुड हैव गो टू एन ऑथेंटिक डॉक्टर, और उससे आप कंसल्ट करें, और इसको इफ़ इट रिक्वायर्ड सर्जरी तो वो आपको सर्जिकल इसको रिमूव कर देगा। इफ़ इट रिक्वायर्ड सम मेडिसिन्स और स्टूल सॉफ्टनर्स और फूड सॉफ्टनर्स, वट एवर ही डिवाइसेस यू, so that will be better for you. Clear? Now the last disease which I'm going to discuss, that is related to our topic, to our chapter, that is ulcer. So dear students, ulcer आपने नाम सुना होगा। अल्सर कहते हैं इट इज़ अ सोर, the formation of sore in the mucosa of esophagus or stomach और duodenum। आमतौर पर यहाँ पर सोर एक ओपनिंग से बन जाती है, जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है वो रप्चर हो जाती है। द रीज़न बिहाइंड दिस, तो ये तो जस्ट मैंने अल्सर को डिफाइन किया। ये बेसिकली टॉक अबाउट मोर प्रिसाइसली, दिस इज बेसिकली पेप्टिक अल्सर। क्लियर? सो इसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर डिटेल से, स्टमक में और ड्यूटेनम के अंदर। सो देयर इज अ लेयर ऑफ म्यूकस, layer of mucus formed in our gut or digestive tract, which prevents the action of enzymes on epithelial lining as well as from corrosive action of HCl. So if the mucus layer is broken down due to any reasons, due to spices, due to certain infections, so dear students, इसकी वजह से क्या होगा कि जो mucus layer है वो break down होगा, and it leads to formation of peptic ulcer. So dear students, this peptic ulcer, it is of three types. इसकी तीन types है dear students. Number one is esophageal ulcer. Number two is gastric ulcer, and number three is duodenal ulcer. Clear? So the peptic ulcer in esophagus, it is
the peptic ulcer in esophagus. It is called as esophageal ulcer. The peptic ulcer in stomach is called as gastric ulcer, and the peptic ulcer in duodenum, the first part of our small intestine. If there is the peptic ulcer in the duodenum, it is called as duodenal ulcer. Clear? So its causes: so there is imbalance between gastric secretions or gastric juice, secretions, especially the mucus. Number two, it may be due to bacteria known as H. pylori. ये आमतौर पर स्टमक के अंदर खास तौर पर उसका जो पाइलोरिक रीजन होता है उसी के नाम से इट्स हेलिकोबैक्टर पाइलोराई. सो H. pylori, it is a bacterium which also causes the peptic ulcer. Clear? इसी तरह से use of spices, ठीक है, too much spices, they also lead to some the peptic ulcers. And also if there is excessive secretion of gastric juice, means the जो gastric acid है और gastric acid ज़्यादा secrete हो रहा हो और mucus जो है वो कम secrete हो रहा हो, तो उस condition में भी it leads to peptic ulcer. Clear? And sometimes or occasionally the peptic ulcer leads to perforation. Perforation का मतलब है सुराख हो जाना, ठीक है. It means the whole सुराख, ठीक है, जहाँ पर बने एसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर या ड्यूडेनम के अंदर. आमतौर पर स्टमक और ड्यूडेनम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर अगर बन जाए तो डियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है, it is a situation in which the contents of stomach or duodenum get enter into abdominal cavity or peritoneum or peritoneal cavity, leading to peritonitis, means the inflammation of peritoneum. So dear students, that is very dangerous situation. One should immediately seek medical treatment. So dear students, ये इसमें फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए. इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको बता देता हूं, जो कि अहम हो सकते हैं इसको डायग्नोस करने के हवाले से. एंड इट इंक्लूड्स स्वेयर एब्डोमिनल पेन, यानी इस रीजन के अंदर स्वेयर पेन हो सकती है. नंबर 2, डायरिया. नंबर 3, vomiting, nausea, especially it is related to before eating or after eating. So before eating or after eating ये पूछा जाता है in order to diagnose whether it is a gastric ulcer or duodenal ulcer, और बाद में फिर इसको with the help of certain diagnostic tools इसको diagnose भी किया जा सकता है. Clear? If it is bacterial infection, बैक्टीरिया की वजह से है तो फिर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी.
और फिर द डॉक्टर विल सजेस्ट यू some medicines like the antacids and like this kind of medicines. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।